उन्नीस 1990 मसीहा भारत में आरंभ है लिबरालाइजेशन उदारीकरण पर भारतीय मार्केट रे गोटे बड़ हलचल है एवं यार बड़ बेनिफिट मिला आईटी सेक्टर को। आईटी क्षेत्र में अनेक उद्योगी तैयारी हेले, .com बूम आसिला एवं देश रही विदेश में व्यापार कले ओडिशार एवं भारतर उद्योगी माने। यही समय रे राज्य रे जड़े उद्योगी विदेश कथा चिंता न करी भुवनेश्वर में निजक एस्टाब्लिश कले, निजर व्यवसाय बढ़ाइले एवं आज दिन में से गवर्नमेंट टेक्नोलोजी क्षेत्र में सबुठारु बड़ कंपनी हिसाब से ठिया हो पारिछंती एवं सफलतार सह 25 वर्ष रे पदार्पण करछंती। आज बिट्स टू बिजनेस कनक डिजिटल रो एही शो रे आमे भेटिबा CSM टेक्नोलोजी रो फाउंडर प्रियदर्शी नानू पानी को। बापा तो बहुत रागुले आम उपर सो मोर जो कैपिटल रो जो सोर्स ऑफ फंडिंग थिला सेटा भी बंद होगा। बैंक तो आमको पचारनी तो कौट तीनटा कंप्यूटर इन दोज डेज मस्ट बी अराउंड 20-25,000 रुपीज। हम एक्सपेक्ट करियो कि या केबे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हे परिबो हब निश्चय आ आपण प्रथम ही जानिबे व्हेन हाउ आई रियली डोंट नो। 90 दशक मध्यभाग उदारीकरण पर अमेरिका पश्चिम देश सह भारत मध्य आईटी बेस्ड इनफॉरमेशन एज आड़कू अग्रगति करुଥାଏ। नेटस्क्राफ्ट नाविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर सह माइक्रोसॉफ्टर व्यवसाय प्रत्येक दिन खबर कागजर पृष्ठारे आईटी क्षेत्रर गोलापी चित्र बयान करुଥାଏ। ठीक यही समय आईटी क्षेत्र में आसे एक बड़ बूम। .com बूम नारे चर्चित यही समय विश्वर अग्रणी राष्ट्र सह देश में तैयारी होती अनेक ई कॉमर्स और आईटी कंपनी। रेस रे भुवनेश्वर मध्य पछरे न थाए। तेबे भुवनेश्वर आईटी स्टोरी रे गोटे कथा खास थाए CSM टेक्नोलोजी और यार फाउंडर प्रियदर्शी नानू पानी। वर्ष 1998 मेकानिकल इंजीनियरिंग रे BE पर .com बूम आड़ को आकर्षित हुंती भुवनेश्वर जने आंबिशियस यूथ प्रियदर्शी नानू पानी। चाकरी नकरी अल्प किछि संबल रे जने सांगक सह मिसी मात्र 3टी कंप्यूटर रे भुवनेश्वर STPI रे आरंभ करती सॉफ्टवेयर कंपनी साइबरटेक सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया CSM। बेंगलोर हैदराबाद जीवाकू मन बलांती नहीं, ओडिशा रे रही निज पई नुआ सुजोग खोजंती नानू। वेबसाइट डिजाइन करती, ई कॉमर्स साइट चलांती। एहा मध्यरे गवर्नमेंट टेक्नोलोजी क्षेत्र में देखती बड़ सुजोग। गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस क्षेत्र में बड़ आईटी इनोवेशन आनती प्रियदर्शी नानू पानी। खाली ओडिशा नुहे, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब रे नानू को इनोवेशन नागरिक सेवा क्षेत्र में बड़ गेम चेंजर रुहे। सफलतार अनेक सोपान डेई आज 25 वर्ष रे पदार्पण करिछि CSM टेक्नोलोजी। उन्नीस 1998 मात्र 3टी कंप्यूटर सह 3 जनरू आरंभ होइथिबा CSM रे आज दिन में काम करुछंती 1300 आईटी प्रोफेशनल। दिने भुवनेश्वर रे छोटो क्यूबिकल रु व्यवसाय आरंभ करिथिबा CSM आज दिन में व्यवसाय करुछि 3टी महादेश रे। मेकानिकल इंजीनियरिंग कले 1998 रे जतबे .com बूम चलथिले, जतबे बेंगलोर जाउथिले लोक, हैदराबाद जाउथिले, सेतबे आपण ओडिशा रे रहिले, भुवनेश्वर रे रहिले। लोक जतबे बिजनेस बाहर कंपनी संगे करिया पई चाहूथिले US UK रे, आपण देसी लोकों को नेकी गवर्नमेंट रे भी बिजनेस कले। कोन लुक्रेटिव थिला? लुक्रेटिव वाज बिकॉज बेसिक कंपटीशन नथिला। आई मीन इन वेरी सिंपल टर्म्स जदि मु कहिबी, किंतु बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड गेटिंग इनटू आईटी ए जिनसटा आमे जेतले पास आउट कलु इंजीनियरिंग सबु सेतले हमर पूरा बैच वेदर यू आर सिविल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल एवरीबॉडी वेंट इनटू आईटी। 98 रे जेतले बिजनेस आरंभ कली सेतले .com बूम तो थिला, बट ताचे बड़ गोटे थिला Y2K। आई मीन Y2K पई बहुत लोक
American companies were hiring, and IT was more driven from America. किंतु जिनस हो कि आमको माने आरंभ करिया बिजनेस और इमीडिएटली टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इन अमेरिका सेटा इच्छा तो से तळे भी थिला और एबे भी अछि सेमती कांटेक्ट नथिला कि नेटवर्किंग ना सेमती किछि कांटेक्ट और किछि नेटवर्किंग नथिला बट द पॉसिबिलिटीज इन आईटी पॉसिबिलिटीज विथ इंटरनेट इज समथिंग जोटा कि which was very aspirational. Basically local जगह रे was more of a learning bed. Man शिक्षा लगी तो कोड कोड जगह दरकार जे कौन करि परिबा हमें and then that is something whatever जहाँ हमें करिबु सेटा नहीं करी हमें बाहर देश रे right we will sell our capabilities. That was the plan. आज यदि देखिबा हमें CSM एवं बहुत नानु पानी both are successful. सेतबेला अपन बिजनेस केमती स्टार्ट कले दैट पुनी ओडिसा रो ओडिसा रो स्टार्ट करिया लगी दैट वाज बाय एक्सीडेंट एमती किछि प्लान नथिला हाल भी तो आपण वेल टू डू फैमिली रो थिले आपण कहले कि जॉब करिया पे जिबा बेटर रहिबो सेतबेले मैकेनिकल सो हाउ डू यू डिफाइन वेल टू डू इज अ बिग क्वेश्चन बिकॉज माय फादर वाज अ माने पब्लिसिटी अंडरटेकिंग रे से काम करथले से ओएनजीसी रो रिटायर कले वी कम फ्रॉम अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली एंड आई वाज डेस्टिन्ड टू बिकम एन इंजीनियर एंड गोटे भलो चाकरीटे करिवि किंतु मो भौणी बोथ ऑफ अस हैव डिसाइडेड टू शी इज अ डॉक्टर आई एम एन इंजीनियर सी तांको प्रोफेशन रे रहिले मो प्रोफेशन रु जहाँ पाठ पढ़ी से प्रोफेशन रु बाहर की जाइकरी समथिंग इन आईटी दैट वी डिड द बेसिक इंटेंशन वाज दैट जेहेतु कि घर एट थिला एठू किछि गोटे गराज कंपनी और गोटे स्टार्टअप करबाटा जेति कि पैसा दरकार कैपिटल जेति दरकार कहीं बापा तो बहुत रागुथिले हम ऊपर ଆଉ ସो ମୋର ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲର ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଆମକୁ ପଚାରିବନି ସୋ କୁଆଡ଼ୁ ପଇସା ଆଣିବା ତ କୋଉଠୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥିଲା those days you see I to had no money but then ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଦେଲି ଆଉ ସିଏ କିଛି ପଇସା ଲଗେଇଲେ ରାଇଟ୍ ହେଇଥିବ 3ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଗୋଟେ I mean, I think in those days must be around 25,000 rupees. That is it. And that was a lot of money then. And तापर धीरे धीरे of course किछि capital हम inbuilt कलु. Start कले सेटा घरे. सेटा आपनकर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जेबे सब करूचंती आपनकर इनक्यूबेशन सेंटर्स जो करूचंती यूनिवर्सिटीज भितरे तो सेठी हम गोटे 100 स्क्वायर फुट रो जगह गोटे निकरी तो सेठू आरंभ ऑफकोर्स हमको आम भड़ा दे पार नौ राइट वर्ष धरिकी किंतु सेटा दैट्स द एडवांटेज ऑफ यू नो आई मीन बट दे आल्सो अकोमोडेटेड एंड आई वेरी प्राउडली से टुडे दैट यू नो हैड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एंड दैट पर्टिकुलर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट न होता maybe we would not have you know I would have done something else than IT मोर गोटे सांगटे थिला से मो पाखरा से पार्ट टाइम करूथला केते एम्प्लॉय थिले एम्प्लॉय नथिले गोटे पार्ट टाइम लोक थिला से दैट इफ यू हैव टू कंसीडर हिम एज एन एम्प्लॉय एंड देन लेटर ऑन बहुत कम लोक माने आई थिंक द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ वी हैड 4-5 पीपल या 5 पीपल सीएसएम रो जर्नी स्टार्ट हला सीएसएम जर्नी स्टार्ट आपनकर कोन थिला फर्स्ट प्रोजेक्ट First project, we did everything to survive. I did the whole world of things. Say somewhere .com boom thila, तो हमें गोटे first portal Odisha रो called OdishaIndia.com we launched. You know, way before maybe the Bansal brothers of Flipkart or you know Jeff Bezos of Amazon were selling some. I mean, had started selling books on internet. So we started called OdishaMarket.com. तो हमें ताधरे commerce करथुलु right e-commerce and we were earning in dollars and बहुत गुड़े प्रकार जिनस से कराई गोटे ट्रेनिंग सेटअप कलु एनीथिंग एंड एनीथिंग दैट एनेबल्ड अस टू अर्न सम मनी फॉर अस टू रेंट दे परथु इंटरनेट रो पैसा दे परथु आ जो एम्प्लॉय थिले तांको पैसा जेमते दे परथु आफ्टर सुपर साइक्लोन मे बी अराउंड 2000 we got our first break in British Petroleum in Vietnam Ho Chi Minh City रे तो आम गोटे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग गोटे सॉफ्टवेयर काम मिलला सो सेठी आमे तो आमे हमर गोटे दिटा स्टाफ सो वी वेंट देयर सिंगापुर एंड हो chi minh सिटी वी स्टेड देयर एंड वर्क देयर सो that I think is the first break good 23 years back गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रे अपन फर्स्ट ब्रेक केम मिलथिला सेटा by accident again
So we were nowhere ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମର କିଛି ମାନେ ଆଖପାଖ ବି କୋଉଠି ଦେଖାଇନି rather than using the roads and electricity and other things what the government provides. So what happened uh, somewhere I think because the government was also trying to adapt IT तो आमे सबू ब्लॉक स्तर रे କିଛି ଗୋଟେ ଅଟୋମେସନ୍ କରିବା ଲାଗି ଚିଠିରେ ଯେଉଁ ଡେଟା ଗୁଡ଼ା ଆସୁଥିଲା ମାନେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ଲକ୍ସ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଫର୍ ଦେମ୍ ଟୁ କମ୍ପାଇଲ୍ that could have been made very easy through a web form where you enter data and you can see. So that actually gave us an opportunity कि this is a complete virgin field and there's so much of a problem and the governments have no other option other than to digitize. So we thought that this is a good field and why not create a domain around it. But the central focus is that you are a tech company, so the tech can be applied to governments or to private or to enterprise, to anyone. So that is where this learning actually started. And since we realized that there is ample of opportunity there and competition is less because everybody was trying to be towards the west and we wanted to be in India to create a brand for ourselves, create a capability for ourselves, create an institution for ourselves and then probably take it to that next level. अपन स्टार्ट करले 1998 रु आज 25 इयर्स हे गला CSM टेक्नोलॉजी को ये जो क्रेडिबिलिटी आपण बनै जंती एंटरप्राइज हो कि गवर्नमेंट रे कोन परिश्रम करिया पड़थिला पे परिश्रम तो सरू नहीं परिश्रम दिन को तो 15 घंटा तो दवा पड़े सो दैट इज सेटा तो गिवन एज एन एंटरप्रेन्योर आपन करिया पड़े जेहेतु आम टेक्नोलॉजी रे काम करछु होल्डिंग टैलेंट कंटिन्यूअस लर्निंग एंड बीइंग रिलेवेंट आपण समय सहित रहा दरकार आउ समय सहित रहा लगी यंग पीपल को सहित बेसी रहा दरकार कहीं दे नो मच मोर दे आर मच मोर टैलेंटेड एंड we are roughly around 1300 people and I consider that everybody here बहुत पाठ पढ़ुचंदी they are very ambitious and they are go getters so managing people is a big challenge and पाठ भी बहुत पढ़िया पड़े नुआ टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करिया पड़े तो there is no end to it. CSM रा सफलतार बड़ रोल रही देश और विदेश रे गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज सॉल्यूशन सह एंटरप्राइज सॉल्यूशन क्षेत्र में सक्सेसफुल डिलीवरी CSM रा फ्लैगशिप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस मध्य रही माइनिंग सेक्टर पई i3MS सॉल्यूशन स्टूडेंट एकेडमिक मैनेजमेंट पई SAMS स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पई विद्या वाहिनी टूरिज्म क्षेत्र पई डिजिटल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एहासह आफ्रिकान सबकंटिनेंट इथियोपिया रे प्रोडक्टिव सेफ्टी नेट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एहासह गांबिया रे लैंड रजिस्ट्री प्रोजेक्ट सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम और केनिया रे इंटीग्रेटेड टी ट्रेड ऑक्शन सॉल्यूशंस एहासह नॉर्थ अमेरिका और कनाडा रे CSM निजर सब्सिडरी माध्यम रे विभिन्न प्रोजेक्ट रे काम करुथिबा बेले एशियन कंट्रीज विशेष करी मिडल ईस्ट कंट्रीज और दुबई रे अनेक प्रोजेक्ट रे काम करुछि. आज हम जानबा चाहिए एक्चुअली जे CSM रा ऑपरेशन हाउ बिग आउ को प्रोजेक्ट रे आपण काम करछुंती और CSM भी आम ये हेडक्वार्टर भुवनेश्वर तीन लोकेशन में आम काम करुँ इन्फोसिटी रे आप लोकेशन को आ गोटे भी भड़ा अच्छी सो आमर सेटअप्स आर देयर एट न्यू दिल्ली एट जयपुर इन राजस्थान पटना इन बिहार आम ए सेंट्रल मिनिस्ट्री बहुत गुड़े कम कर सो इट्स पैन इंडिया ऑपरेशन लगी दिल्ली रे किछटा लोक अच्छा Africa रे आमे अच्छु in Addis Ababa in Ethiopia so we have people there projects there then we are there at this place in Kenya so Nairobi ebe Gabon रे आमे west of Africa रे we are going to set up so apart from this COVID time रे we started North America so we have an office set up at Seattle there are a couple of people there is a CEO Americas and at Ontario State in Canada that is there. So our focus more is on North America right now.
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛୁ ବିଜନେସଟା ଅପରେସନଟା ଓଭରସିଜ୍ ମାର୍କେଟରେ ୟୁ ଆର୍ ମୋର୍ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଆଫ୍ରିକା. Yes. Because so the basic DNA has remained same. So I'm a sub risk taker. You have to take your chances. जो थी मैं जमती ओडिशा रे मैं आरंभ करूँ. That itself was little bit disruptive. सेमती अफ्रीका भलिया कॉन्टिनेंट रे जो थी टिके वीसा मिलिया माने अमेरिका जे भी कष्ट हो जाए वीसा मिले अफ्रीका रे. बहुत उड़े rules नियम negotiations अच्छी to work there. So, but then it is still a virgin place. There are not many companies, not many competitions, and there's both ample of opportunity to innovate and create a brand for yourself. Our first break in Africa actually came from Sudan. So, it was a Greater Nile Petroleum Operating Company thila, which was a joint venture of ONGC, Sudan government, and Statoil of Norway. And आमे तांको पई बहुत उड़े काम करछु. We work there and we still continue to working. तांको ना बे चेंज ही छी. तो सुडान गवर्नमेंट रे आमे सेठी काम कलु. सुडान गवर्नमेंट हॉस्पिटल which is like एम्स आपण केमते अछि सेटा दैट रन्स ऑन CSM सॉफ्टवेयर. सुडान एयरवेज वी हैव वर्कड फॉर. सो सुडान रो जर्नी आरंभ. आपण ओडिशा रे काम करूछंती, इंडिया रे बहुत स्टेट संगे रे काम करूछंती, गवर्नमेंट टू सिटीजन बहुत प्रोजेक्ट रे आपण काम करूछंती. कोठी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखिछंती? टेक्नोलॉजी सी ओडिशा बहुत डेरी रे आरंभ हैला बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करिया. एबे सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट राइट. यू नो देयर इज अ विल ऑफ द गवर्नमेंट टू पुश डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. किंतु aguru I think Telangana and Tamil Nadu are two states very high on IT. Nowadays Rajasthan government is also very high in IT. Rajasthan have invested tankara pakhabaki 2000 khande government staff khali achanti IT re. ଆପଣଙ୍କର ambitious project ବି ଯାହା ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? Because logistics is one of the key area where there बहुत intervention दरकार होची logistics रे. आपनकर हांगकांग रु जिनस पळे आसीबो कलिकता पर्यंत 2 दिन रे. हल्दिया रु भोपाल जीवा लगी 20 दिन दरकार राइट. सो these are challenges that are there. The states have some rules, center has some rules. So and IT is the only solution. So we ame logistics kshetra re gude kaam korchu. We call it as digital logistics management system. So as company we work on some platforms and some services. जेमती हमारा इंटीग्रेटर करके गोटे प्लेटफॉर्म अच्छी which only deals with minerals and metallurgy and those areas. We have something called Footprint which only works in food supply chain management. और probably जेमती हमें कीनिया रे हमारा जो चाहा ऑक्शन हुए for 8 countries. मुंबासा पोर्ट रे गोटे ऑक्शन सॉफ्टवेयर टारे माने दैट एंटायर सिस्टम ऑक्शन सॉफ्टवेयर जहाँ चाह किना बिका सब CSM सॉफ्टवेयर होची. ए प्लेटफॉर्म गुडा को आमे आउरी पुश करिया चेष्टा करछु. एट द सेम टाइम यू नो एज मु जेमते आपन कहली कि समय से तो रेलेवेंट रहया दरकार. अपन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेस रे बहुत काम करछन, बहुत एक्सपीरियंस गेन करछंती. इंडिया रे हो किंबा स्टेट गवर्नमेंट रो बहुत सर्विसेस चाली छी. आमे फ्यूचर को देखि कौन टेक्नोलॉजी ऊपर काम करवा दरकार, अडॉप्ट करवा दरकार फ्यूचर नीड को देखि. Yeah, so I think artificial intelligence is going to be a disruptor. आपण जदि गोटे ERP टे करिवे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग गोटे को गोटे कंपनी पे करछंती तार यूजर 200 लोक कि 300 लोक तार यूजर. किंतु जदि आपण सिटीजन सर्विसेज करिवे या एनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव सर्विसेज इन इंश्योरेंस और इन बैंक रो जो मोबाइल ऐप देखुचंती केते केते लक्ष लक्ष लोक तो व्यवहार करछंती. यू cannot go wrong. One भूल भाल हे परिबनी राइट. भूल हे गले बहुत असुविधा हे जीवो. Secondly you have बहुत opportunity ताधर innovate करिया लगे. That's the transformation. So transformation comes with technology. So at CSM we started something called CSM Immerse which is to do with metaverse which is nothing but cocktail of various new technology. Emerging tech हमारा गोटे डिविजन अच्छी ताधर 50-60 लोग काम करछंती. So we do data science, deep technology, you know, data science, 3D printing, adaptation of 5G, machine learning leading to artificial intelligence, leading to cognitive intelligence. You know,
there are world of opportunities in emerging tech. So we are constantly invested in that. Plus industrial IoT. That is something that we use in our digital logistics management, wherein industrial IoT is also going to be a game changer. ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବେ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନଭେଣ୍ଟରୀଟା ଏତେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବଲ୍ ବିୟରିଂ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମେଟାଲରେ ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଇକିରି ଲଗେଇ ଦେଉଛି ସୋ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଇଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତ ସେଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ଆପଣ ସିଟିଜେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି because citizen services are like a double-edged sword, right? काइंकी transformative, किंतु से transformative रे जदि ठीक करी बसी गला, then it is very rewarding. आपण जदि केबे क्लास 12th पास करथबे कि क्लास 10th केबे पास करथबे जदि 2009 आगुरु जदि पास करथबे सेतोले आपनको बीजेपी कॉलेज रे पढ़ार इच्छा थिबो किंबा रेवेन्सा रे पढ़ार इच्छा थिबो सेटा आपन फर्स्ट प्रेफरेंस बेस्ड ऑन योर आपन जहां मार्क रखथिबे क्लास 10th रे आपन 10टा जगह जाई के प्रोस्पेक्टस किनिबे समस्त अलग अलग पैसा चार्ज करिवे तारो हिस्ट्री केते कट ऑफ जाईची ता आगो वर्ष आपन को जणा नथिबो एटा बहुत ओपेक प्रोसेस ते थिला तो सेठो ओडिसा गवर्नमेंट रे इनोवेशन हैला किबा कि आमे ऑनलाइन एडमिशन करवा सबू कॉलेज लोग नहीं माने गोटे फॉर्म रहिबो जोथरे कि छात्र भर्ती करिवे गोटे दिन रे सबू कॉलेज रो सिलेक्शन इंजिन चलिबो सेइथरे गोटे दिन रे रिजल्ट बाहरिबो कि किए काहू कोन मिलिला एंड इट्स अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आई थिंक दैट टू माय ओपिनियन इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस सेम जिंस हम बिहार रे भी करूछु सेठी तो आउरी माने 18 लाख 19 लाख पिला एका संगरे क्लास 10th रू 12th को जाउछंती कि 12th रू डिग्री को जाउछंती इन माय ओपिनियन दैट इज वन सच आ गोटे भी सेमती ए ओडिसा रे ही हमें एक्सपेरिमेंट करी करी कि आई डोंट थिंक एटा कोठी भी इंप्लीमेंट हेची दुनिया जगह रे सब एडमिनिस्ट्रेटर कर प्रॉब्लम हैला कि चिठीटे खोरदारू पठेले हेल्थ डिपार्टमेंट को से लागे मासे पहुंचीबा लगी रजिस्टर्ड पोस्ट आसीबो दस्खत हेथबो इंक साइन दस्खत हेथबो आमे सेठी गोटे लास्ट माइल रे गोटे प्रोसेस टे पकेलु ताकू ई डिस्पैच बोली को जे एई प्रोसेसटा रे आपण स्कैन कर देबे आउ लोक पाखु माने ईमेल द्वारा पळेबा आउ तार गोटे ई स्पेस टे क्रिएट होय से मना कर परिबेन जे आउ तांको रिसिपेंट ऑफिस को कुआई छी सकाळे संध्याळे दिथर तुमे खोली की देखिबो तुम ई स्पेस इट इज जस्ट एन इनोवेशन एटा को मन अछि नारायण मूर्ति थरे गोटे जूरी रे थिले नास्कॉम तरफरु से एटा को प्रथम माने ही इज गिवन द फर्स्ट प्राइज कि दीज आर इनोवेशन एमती किसी आउ किसी इनोवेशन करे इच्छा अछि हाँ इन एवरी टाइम वी आई एम इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन हमर कंपनी नो आई थिंक स्लोगन होची ब्रेकिंग थॉट बैरियर्स सो वी आर जस्ट नॉट सेटलिंग माने ब्रेक द स्टेटस को ऑलवेज CSM IT कंपनी ओडिशा रो सक्सेसफुल IT कंपनी हम एक्सपेक्ट करियो कि यहा केबे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हे परिबो 3 to 5 इयर्स भितर हबो निश्चय आ आपण प्रथम ही जानिबे सो निश्चय हबो सेटा एंड बिकॉज ग्रोथ ता आपणकर ए कैश फ्लो रे हे पारेनी माने ये गाड़ी चलची राइट सो इट हैज इट्स ओन इश्यूज कैश फ्लोज एंड ऑल दोस थिंग्स आर फाइन किंतु ग्रोथ फंड ता आपणकर इधर यू गो टू पब्लिक और यू गो टू प्राइवेट इक्विटी किंबा आपण बैंक को जेंकरी पैसा आनी करी लगे करि परिबे सो व्हिच इज बेस्ट फॉर द कंपनी आई मीन हाउ यू आपनकर वैल्यूएशन ऊपर सेटा निर्भर एंड आपनकर रिस्क एपिटाइट और द एपिटाइट टू मेक मोर मनी एंड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट तो एडा सब को नै करी एटा गोटे हिसाब ते अछि वी हैव इट्स द वर्क हैज ऑलरेडी स्टार्टेड when how I really don't know but yes growth is there growth fund is needed to the company शहे स्क्वायर फुट STPI इनक्यूबेशन सेंटर रु आरंभ होइथिबा CSM रो 25 वर्षर सफलता बयान करे आजिर दिन में इन्फोसिट रे थिबा एहार निजस्व 1 लाख स्क्वायर फुट डेलीवरी सेंटर और ओकाक टावर थिबा एहार मुख्य कार्यालय एहासह पाटना नोएडा और जयपुर सह देशर 8टी राज्य में थिबा CSM रो ऑफिस और डेलीवरी सेंटर विगत 25 वर्षर यात्रा रे ओडिशारू बाहरी CSM मेड इन ओडिशा निजर IT ब्रांड को एशिया सह आफ्रिका और अमेरिका रे पहुंचाई परिछि जहार क्रेडिट
कंपनी फाउंडर प्रियदर्शी नानू पानी को लीडरशिप और कंपनी प्रत्येक कर्मचारी को दियंती सीएसएम रो वरिष्ठ अधिकारी। तार जो गुणटा अच्छी से ही इज वेरी डिटेल जानती कौन सी जिनस बहुत सहजरे से कहबे जे हेई गला बोली कहबेनी तो गोटे छोट इवन छोट वेबसाइट डिजाइन हो कि गोटे छोट एप्लिकेशन टे करा जो से बहुत डीप जानती एंड तांकर मेन फोकस थिला जे कस्टमर को केंती सैटिस्फाई करेंगे टू द बेस्ट लेवल माने जेंती कस्टमर कहबे जे व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग यू हैव कम अप विथ मोर। People are the bloodline of CSM. We give the primary importance to people, their well-being, and I'm not saying just for the sake of saying. It is people are the bloodline of CSM, and right from the day or the moment a position has come out into our into the recruitment group, from that day, from that moment, our clock starts ticking, that how the person is, how the best person or a person that we can utilize and hone up his skills and everything can come into the system, and how he or she should go through the career and grow to a level that he will not regret joining CSM ever. सीएसएम फाउंडर प्रियदर्शी नानू पानी का मतरे आइडिया, इनोवेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कल्चर परी एथिकल वैल्यूज सीएसएम सक्सेस रो पिलर। सेथिपाई कंपनी रो बेसलाइन से रखिचंती ब्रेकिंग थॉट बैरियर्स। जो रिसेंट डेवलपमेंट ओडिशा आईटी रे चलुची डिफरेंट कंपनीज आसिलेनी बे ओडिशा को 3 to 5 इयर्स रे ओडिशा रा आईटी को आपण कोड देखंती। देखो ओडिशा आईटी हैज ट्रांसफॉर्म्ड बट जो ट्रांसफॉर्मेशन होइछे पर्यंत नेक्स्ट 5 इयर्स रे जोड़ा 20 वर्ष रही है नेक्स्ट 5 इयर्स रही। सो एज ट्रू फॉर एनी टेक कंपनी गोटे टेक्नोलॉजी कंपनी इज ऑलवेज सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। सो हठात कि गोटे समय आसो से ग्राफटा एमती जोड़ा जाऊँगी से एमती हो राइट फॉर ए पीरियड। सो यू हैव टू एम्ब्रेस दैट मूवमेंट। आपणकर आजिका डेट्रे भुवनेश्वर बोधे माई एस्टिमेट समथिंग अराउंड 16 ରୁ 18 हज़ार लोक कि 20 हज़ार लोक आईटी रे काम करछन, व्हिच इज आल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। एबे जो गवर्नमेंट रो जो पॉलिसीज जंग सब आसीची, जो नुआ आईटी पॉलिसीज जोड़ा आसीची and the push for digitization, whether it is in government of India or the state government, and the intention of the state government, we will see probably 50,000 people to be getting net added next 3 to 5 वर्ष भितर। जमती आपनकर एठी आई थिंक वन ऑफ दिस अमेरिकन कंपनी से एठी गोटे कंपनी को एक्वायर कले 100-150 लोक तांकर थिले, आजिका डेट रे 3000 लोक होइलेनी काहेकि एठी लोक सब लोकल लोक अछंदी से टेक्नोलॉजी रे जानछंदी। तो मु गोटे ग्रेट बिलीवर कि बेसी कंपनी हेले विद द बॉयंसी एवरीथिंग ग्रोस अप, एंड दैट इज द स्टोरी फॉर चेन्नई और हैदराबाद और बैंगलोर। गोटे प्रॉब्लम रहउची भुवनेश्वर रे टैलेंट शॉर्टेज रहउची। आपण 25 इयर्स गोटे कंपनी चलै छंती, सक्सेसफुली से जिनसडा को मैनेज करछंती। टैलेंट देखो तो टैलेंट इज समथिंग वी आर इन अ इंडस्ट्री। आम बड़ भाई माने कि बापा माने सब they in their entire service career 3 companies, 2 companies or 1 company, right? In IT you have to take 10 companies, right? That is how it is. So talent management जेमती मु एबे CEO अछि, मु कहूची कि 25 वर्ष मु गोटे एंटरप्रेन्योर। मु भाबुची कि मोर एंटरप्रेन्योरल स्किलटा एबे एठी खत्म हो जाय दरकार, काहे कि मो हिसाब रे आ कंपनी चली परिबनी। Professionals have to come and run the company. So I am ready to change over the role. सेही भलिया माने मु एबे मु अलगा मु मैनेजिंग डायरेक्टर हे पारे, मु चेयरमैन हे पारे, मु सीईओ रो रोलटा करिबिनी। सेमती सबु लोकंकर गोटे करियर एस्पिरेशन अछि। आपण जदि ताको मैप कले ठीक करी विथ ए प्रॉपर करियर डेवलपमेंट प्लान कि को लोक कहूचे कि मते पैसा दरकार जल्दी, मते मु टेक्नोलॉजी फील्ड खाली रह चाहूँगी कि मु पावरफुल हवा चाहूँगी कि यू नो आई डोंट वांट टू बी ए मैनेजर, आई वांट टू बी आई जस्ट वांट टू बी ए टीम प्लेयर। सो यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल दोस थिंग्स, create a career plan, and then you have to be very transparent. People have been rewarded also.
we have tried our best to keep it as transparent as possible and as people centric as possible. पिपल सेंट्रिक एवं जो छोट बड़ कंपनी कथा कहले आप गोटे स्टार्टअप मानकर गोटे बड़ मेंटर ओडिशा रे कोंदी नानू पानी जो स्टार्टअप हाथ धरती तार ग्रोथ गोटे भल ग्रोथ से मिले और मेंटरिंग भी आपण करती स्टार्टअप मानकर सक्सेस केमती पाइबे तार मंत्र आपन पाइ कोन रही कारण आपन दिने गोटे स्टार्टअप कंपनी में स्टार्ट करथिले आज गोटे सक्सेसफुल कंपनी होती Mentoring is something that I tell them that no, other than hard work there is no other space. But there are few things which I have practiced. जेमती आमे कहू 7 elements जेमती आपनकर डोमेन हेगला कौन आपण करूचंती से जिनसटा को जदि आपण ताको एक्सटर्नलाइज न करिवे आपण जदि गोटे कन्वर्सेशन मु आपण जदि बुझे न परिबे 30 सेकंड रे जे कौन करंती कौन राइट आउ सेटा गोटे कन्वर्सेशन जदि सृष्टि न करे सेटा गोटे बेंचमार्क सहित गोटे ग्लोबल बेंचमार्क सहित यदि सेटा कनेक्ट न कला ताले गोटे लोकर इंटरेस्ट केबे होबनी कौन करूचंती आपण द्वितीय हला कि यू नो इनोवेशन इज समथिंग विच इज अ बेडरॉक आपण ताकू एनी एंटरप्राइज आपण सेम प्रकार दुईटा संस्था भी देयर हैज टू बी सम इंडिजिनियस थिंग सम प्रोसेस रे इनोवेशन हला कि कौन करूचंती से गोटे कौन गोटे तो थी सेटा को आइडेंटिफाई करके सेटा कहबाटा निहाती दरकार और सेटा करिया भी दरकार क्वालिटी इज वन ऑफ देम राइट यू नो आपन क्वालिटी खाली भीतर कले हबनी बाहर क्लाइंटटा भी आपन एम्प्लॉय जदि बाहर को जाउचंती से माने भी कि गोटे देखले तांको कहि परिबो ए माने क्वालिटी जिंस करंती बोली क्वालिटी इनोवेशन डोमेन कल्चर governance and I'm a big voter of governance and that is something that you know the startups have to do. I've been a fan of American companies and samastung kuhe ki one process leads to another process. American company gote panchta lokonkor company jaha jemti structure करथिबे jaha roles and responsibility करथिबे से 50 टा होंतु जेतोले 500 हेबे कि 5000 हेबे it will remain same. Governance is a very big thing right ame बहुत गुड़े स्टार्टअप्स कर ग्रोथ टा हे पारेनी बिकॉज ऑफ समवेयर दे लूज ऑन द गवर्नेंस फैक्टर राइट दे आर नॉट एबल टू हायरार्कीज मेंटेन करि पारंतनी एंड डिसरप्शन आडे सदाळे लागिले किंतु काम आनिवाटा बड़ काम करियाटे भी बड़ कोउटा बड़ 50-50% धरिया पड़ियो जो काम करिवा लागि देयर आर 80% ऑफ द पीपल काम आने लगे देयर आर ओनली 20% ऑफ द पीपल से जो काम आनिया पई जो प्रोसेस आपन को फॉलो करे पड़े इफ यू डू नॉट फॉलो इफ यू हैव समथिंग एज अ शॉर्टकट इट विल क्रिएट प्रॉब्लम राइट लास्ट क्वेश्चन बिजनेस रे सर्वाइवल और सक्सेस रा मंत्र कोन आपन वर्क हार्ड आ कोन काम करिवे जब सी आपन सदा गोटे बड़ पिक्चरटा बिकॉज फेलियर्स विल कम आई मीन नो बिजनेस नो करियर is successful unless and until you put in a hard work and if it is not filled with failures. So in my opinion to whatever that I have been able to do, I have more failures than success. So I keep on because IT is we work in such an industry that you know I don't need to diversify because within this organization also diversification is there. Any new domain, any new client, any new geography, you have already diversified. So bringing all of them together and achieving a singular goal requires बहुत effort दरकार आपन को processes and governance रे and तापे बहुत परिश्रम करे पड़े. So I keep telling all youngsters and all those people who want to make a successful career that there is no shortcut to work hard and attitude बहुत माने रखे. ये एग्जाम्पल मो सदाळे दिए कि विनोद काम्बली एंड सचिन तेंदुलकर बोथ ऑफ देम इक्वली टैलेंटेड रादर काम्बली वाज मोर टैलेंटेड बट आई शुडंट बी सेइंग दिस बट देन गोटे बाउंसरटे तंकु बाजिगला तो से जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर से गोटे बाउंसर बाजिगला तो सेदनुठु तंकर करियरटा ही से अलगा आगे गला. दूसरा साइड हला सचिन तेंदुलकर वी ऑल नो हाउ मच हार्ड वर्क दैट ही डज एंड ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट. So whether you are a very talented person or whether you are a gifted person, if you have to be successful, you have to just put in a lot of work. And then आपण कहि परिबेनी मु 9 टा 5 टा काम करिवो बोली. So you have chosen this path, you have to work hard. Thanks. Thank you Rudra babu.